Good morning, students. Today I am going to discuss regarding the kinetic interpretation of temperature under the chapter 13 kinetic theory of gases. So kinetic interpretation of temperature, what does this says? Kinetic interpretation of temperature हमको क्या बताता है? Actually this gives the relation between the kinetic energy of a gas molecule with the temperature. So how kinetic energy of a gas molecule is related with the temperature? So as we know that kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the temperature of the gas. And now we will derive the relation regarding the kinetic energy per molecule of a gas. So relation average kinetic energy of a gas molecule, average kinetic energy per molecule of a gas, Now we will derive the relation of average kinetic energy per molecule of a gas. So consider a 1 mole of a gas, यानी अगर हम 1 mole of gas अगर हम लेते हैं, and let P be the pressure, V be the volume, and T be the temperature, and M be the molecular mass, and M is the molecular mass of the gas. Then we know that density, this density is equal to होती है, density is equal to mass upon volume, because M is equal to dV, mass is equal to density into volume, so density is equal to mass upon volume. If we denote this density as rho, then rho is equal to M upon V. And according to kinetic theory, the pressure exerted by the gas is, and according to the kinetic theory, जो kinetic theory थी उससे जो pressure है, that pressure exerted by the gas is P is equal to 1/3 into rho V square bar. ये अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था. Then this will be equal to 1/3 and rho की जगह अगर हम rho की वैल्यू रख दें तो that will be M upon V into V square. This is velocity, this is volume, this is velocity. Or we can say that this PV is equal to, cross multiply कर दे तो PV is equal to 1/3 capital M into V velocity square bar. And this अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें अगर हम इसको, then we will get 2/3 into 1/2 M V square bar, and this will be the average kinetic energy E of 1 mole of a gas. This is the average kinetic energy E. This is E of 1 mole of a gas, half M V square bar. This is the average kinetic energy of 1 mole of gas. So we can say that this PV is equal to 2/3, and we can write E over here. This is the average kinetic energy of 1 mole of gas. And we know that ideal gas equation. What is the ideal gas equation? PV is equal to RT. This is ideal gas equation for 1 mole. Where N is equal to 1. So PV is equal to RT. This is ideal gas equation. So this is equation first. This is equation second. So on comparing equation number 1 and 2, what we will get? The left hand side is equal. So we can put right hand side equal to right hand side. Right hand side of equation 1 will be equal to right hand side of equation 2. So this will give 2/3 into E is equal to RT. Or you can say that E is equal to
3 by 2 RT. So this is the average kinetic energy per mole. So the above equation gives the mean kinetic energy or average kinetic energy of 1 mole of a gas. If capital N is the Avogadro number, if capital N, अगर यहाँ पे N जो है वो Avogadro number है, capital N, N is the Avogadro number, then the mean kinetic energy per molecule is given by, mean kinetic energy will be E bar is equal to E upon, this is per molecule. अगर N अगर Avogadro number से अगर हम डिवाइड कर दें तो this will be mean kinetic energy per molecule, and this will be equal to 3 by 2 and R by N into capital T, or this R by N is equal to Kb. This R by N is equal to Kb. Kb means Boltzmann constant. So E bar is equal to 3 by 2 Kb. Kb means Boltzmann constant and T. So this is the final equation. This is E bar. So where Kb is R upon N is the gas constant per molecule. This is Kb is the gas constant per molecule and is called Boltzmann constant. Thus the mean kinetic energy per molecule is proportional to the, so this is the final equation. This equation says that the mean kinetic energy per molecule is proportional to the absolute temperature of the gas, and it is independent of the pressure, volume and the nature of the ideal gas. So now E bar is equal to 3 by 2 Kb into T, where capital E is the mean kinetic energy per mole of a gas and E bar is the mean kinetic energy per molecule of the gas, and Kb is the gas constant per molecule and R is the universal gas constant, and capital N is the Avogadro number, and Kb is also known as Boltzmann constant, and Kb is equal to R upon N means gas constant divided by Avogadro number. So now this equation E bar is equal to 3 by 2 Kb into T. This equation clearly shows that the mean kinetic energy per molecule is proportional to the temperature T, absolute temperature of the gas, and is independent of pressure, volume and nature of the ideal gas. Now, since we have calculated that this E is equal to half m V square bar, and this is equal to 3 by 2 RT as we have already calculated. So now from this equation we can calculate the velocity V. V square bar is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा, 3RT upon m. This 2 से 2 will cancel out. So this we will get V square bar is equal to 3RT upon m. So the root is the square root of V square bar is known as root mean square velocity and is given by, so this is known as the square root of V square bar. The square root of V square bar is known as root mean square velocity and is given by, so now since we know that this E, we have already calculated E is equal to half m V square bar is equal to 3 by 2 RT. So now by taking these two equalities, we will find out the value of V square bar is equal to 3 RT upon m, that is cross multiplication, and so the square root of V square bar is matlab mean square mean velocity, mean of the square of the velocity. This V square bar means mean of the square of the velocity, and the square root of V square bar is known as root mean square velocity and is given by, root mean square velocity means root
this is root or this is mean, bar means mean or square velocity. How we will read it? Root mean square velocity. This is known as VRMS. Root mean square velocity. VRMS is equal to under root V square bar. So how we will read it? Root, this is root, this is bar is mean, and this is root mean square of the velocity, and this is equal to under root 3 RT upon M. So from this equation we can say that VRMS is directly proportional to under root of absolute temperature. So VRMS is directly proportional to under root T, where T is the absolute temperature. So this clearly shows that if the velocity of the molecules of the gas is higher, then the higher will be the temperature, because it is directly proportional. So faster the motion of the molecules of a gas, higher will be their kinetic energy, and hence higher will be the temperature of the gas. So this is the kinetic interpretation of the temperature. And now since we know that VRMS is equal to under root 3 RT upon M, so if absolute temperature is equal to, if absolute temperature T is equal to 0, then VRMS is equal to, if we put T is equal to 0 over here, then VRMS will be 0. So we can define absolute 0. So this is absolute 0. T is equal to 0. So we can define this absolute 0. This absolute 0. अब इस इक्वेशन से कि जब हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जब 0 किया, तो हमारी VRMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई. तो इससे हम क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट 0 की, कि एब्सोल्यूट 0 is the temperature at which absolute 0 is the temperature at which all molecular motion stops. मीन्स VRMS जो है वो 0 हो जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सोल्यूट 0 एक टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट 0 एक वो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर आकर के जितनी भी गैस की जो मॉलिक्यूलर मोशंस हैं वो सीज हो जाती हैं, या मॉलिक्यूलर मोशंस जो है वो स्टॉप हो जाती हैं. उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. यानी T को अगर हम यहाँ पे T को 0 रखेंगे तो VRMS हमारा 0 हो जाएगा. So now coming to the next topic, that is equipartition of energy. So the next topic is law of equipartition of energy. तो देखिए law of equipartition वर्ड ही अपने आप में ये बता रहा है कि जो है वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब बराबर बराबर पार्टीशन किसका? एनर्जी का. यानी एनर्जी जो है वो बराबर बराबर पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाती है. दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस लॉ सेज. इट स्टेट्स दैट इफ एनी सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then the energy of the system is equally distributed amongst its various degree of freedom, and energy associated with each degree of freedom per molecule is equal to half kb into T. देखिए ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की, जो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसमें? अमंगस्ट इज वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम में. एंड वो जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ kb इंटू T. क्योंकि हम जानते हैं कि जो टोटल जो हमारी एनर्जी निकल के आई थी
as I have already derived the relation, this energy per molecule that is 3/2 into kb into T. So 1/2 kb into T, 1/2 kb into T, 1/2 kb into T, ये जो है वो जितने भी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो that will be the energy associated with each degree of freedom per molecule will be half kb into T. यानी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल विल बी हाफ kb into T. Now let us understand what is this degree of freedom. So the degree of freedom of a system is defined as the total number of coordinates. Coordinates means points. X, Y, Z. The degree of freedom of a system is defined as the total number of coordinates required to describe the position and configuration of the system. यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि मान लिया जाए अगर कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई सिस्टम अगर है तो उस सिस्टम की पोजीशन को और कॉन्फ़िगरेशन को हमको रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी. तो उस सिस्टम को की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी. जैसे अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, और अगर 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 2 होगा. और अगर उस सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा. नाउ प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. So now the proof of this law of equipartition of energy. Suppose consider 1 mole of monoatomic gas in thermal equilibrium at temperature T. Suppose एक हमने जो है वो मोनोएटॉमिक गैस ली और उसका 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, और ये गैस क्या है? इट इज इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम, और उसका थर्मल इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे है? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. एंड सपोज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 3. यानी जो मोनोएटॉमिक गैस यानी जो सिस्टम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और वो मोनोएटॉमिक गैस का 1 मोल हमने लिया जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T. नाउ अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, so according to the kinetic theory of gases, what we have, according to the kinetic theory of gases, the average kinetic energy of a gas per molecule, according to the kinetic theory of gases, kinetic theory of gases. So according to the kinetic theory of gases, the kinetic energy of a gas per molecule, ये कितना ड्राइव किया था हमने? डेरिवेशन में ये आया था, that is given by per molecule is given by half m v स्क्वायर बार, एंड ये जो ये किसके बराबर आया था? 3/2 kb into T के. So now where v square bar is the mean square velocity of a gas molecule of mass m. This v square bar is the mean square velocity. This is the v square bar means mean square velocity. Bar means mean square velocity. So v square bar is the mean square velocity of the गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m. एंड सपोज अगर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डिग्री, क्योंकि सिंस इट इज हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो देन इट्स वेलोसिटी विल बी, इफ vx
square bar, Vy square bar and Vz square bar are the components of mean square velocity. ये अगर कंपोनेंट है एक्स वाई जेड एक्सिस में, किसके? मीन स्क्वायर वेलोसिटी के अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो वी स्क्वायर बार, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी वी स्क्वायर बार. वी स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार. And this v square bar means, so we can write it from this equation, half m v square bar. This can be written as v 3 by 2 kb vx square bar means half m vx square bar plus half m vy square bar plus half m vz square bar, and this will be equal to 3 by 2 kb into t. So क्योंकि v square bar जो है वो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, and this will be equal to 3 by 2 kb into t. As the molecular motion is random, there is no preferred direction of the motion. So the average kinetic energy of each molecule along each of the 3 axes will be same. तो इसमें क्या होगा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल along each of the 3 axes, along each of the 3 axes, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल होगी दैट विल बी सेम, विल बी सेम मीन्स बराबर बराबर होगी. तो इसके लिए क्या हो गया कि ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू हाफ एम वी जेड स्क्वायर बार. नाउ कंबाइनिंग द अबव टू इक्वेशंस, अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर ले देन वी विल गेट दैट